Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until we get it right. Let's start our trial for today. Let's start with understanding a few more examples from simple interest so that we are better at handling those questions from Olympiads for the same chapter. If you want to remain updated with whatever I'm posting and do not want to miss out on any of my videos, please do like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. So let's start with introduction part 2 for simple interest and then slowly move on to Olympiad questions. Alright, let's start with this question. If a farmer paid rupees 2025 as interest over 3 years at 2% per annum to a money lender, how much loan had the farmer taken? Now, if the farmer has taken paying an interest of rupees 2025 and for over 3 years he has taken, then that means the time period is 3 years and the rate of interest is 2% per annum. What is missing? What we do not know out of these? We know simple interest is equal to P into principal into rate into time by 100. So principal हमें नहीं पता. So what is this loan actually? Farmer ने borrow किया है. He was in need of money. He borrowed some amount from the money lender. So that is the loan. So loan means do not think something else. Where how to solve now? I have not come across this word loan in simple interest. Loan is that principal that farmer had taken for some of his work from the money lender. तो वही पैसा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुआ है वो इंटरेस्ट का वैल्यू हमें पता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमें पता है. ओनली थिंग दैट वी डोंट नो इज दिस प्रिंसिपल. सो लेट्स फाइंड इट आउट. प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा 100 इंटू simple interest divided by rate percent by time. So let's now substitute all the values. 100 into 2025 into 3 into 2, right? So यहाँ पे देखे तो ये जो है this is a multiple of 3. So I can remove 3 from here, cancel out. 3 6 are 18, 2 got means 20 minus 18 is 2, so 22 हो गया. 3 7 are 21, 22 minus 21 is 1, so 15 हो गया, so 3 5 are 15. यहाँ पर वैसे 2 1s are 2 और 2 50s are 100. Then what is the principal that we got? हम principal ही निकाल रहे हैं. What is the principal we got? 0 पहले लगा देती हूँ. Then 5 5s are 25, 2 gets carried over. 5 7s are 35, 35 plus 2 is 37, 3 gets carried over. 5 6 are 30, 30 plus 3 is 33. So simple interest, not simple interest was 2025. Principal that the farmer had taken from this money lender is 33,750. Okay, for a period of 3 years at 2% per annum. Alright, so loan word से confuse नहीं होना है. All that we need to calculate in such a question is use the simple interest formula and find out the principal. Alright, let's start with a new question. What sum of money should be invested for 5 years at 8% per annum to earn the same interest as rupees 3,600 at 10% per annum for 4 years? So हमें क्या पूछा जा रहा है कि find the principal जो कि 5 years at 8% per annum में हमें सेम सिंपल इंटरेस्ट देगा जितना कि रुपीज 3,600 प्रिंसिपल अमाउंट हमें रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 years में देता है. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि 3,600 कितना इंटरेस्ट देता है 4 years at 10% पर एनम. तब हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं फॉर द 5 year पीरियड at 8% पर एनम. सो लेट्स डू दिस. सो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है रुपीज 3,600. रेट परसेंट दे दिया गया है 10% पर एनम, सो पी ए, एंड टाइम पीरियड दे दिया गया है 4 years. नाउ आई कैन इजिली फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम हियर. वेरी सिंपल. इट्स अगर आप समझने में मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है. Finding out the answer is really simple, but if you find it difficult to understand the question in the first place, what is it trying to say, तब you will be wondering how to go about it. So let's understand how to do this. तो पहले तो हम simple interest निकालेंगे for this principal amount for this much rate and time. So 0 0 यहाँ से cancel हो जाएगा, बचेगा क्या? 36 into 4 करूंगी तो 144 होगा, and ये 0 और एक है into 10 है,
So I'll add the 0 here. So जो simple interest है वो 1440 है. Now the question is saying that what sum of money should be invested for 5 years at 8% per annum to earn the same interest as this. तो हमें अभी सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया ₹1440. हमें निकालना है प्रिंसिपल. हमें क्या क्या पता है नाउ? वी नो द सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू ₹1440. We know the time period, that is 5 years, and we know the rate, which is 8% per annum. Now can we not easily find out the principal? Very easily. I'll write here principal, और फिर या फिर लिख देती हूँ required principal REQD. यहाँ पर डॉट देके, therefore required principal is equal to 100 into simple interest by RT. So 100 into 1440 divided by 8 into 5. तो ये 5 1 सा 5 कैंसिल आउट करती हूँ, ये 5 20 सा 100 है. सिमिलरली यहाँ मैं 8 कैंसिल करती हूँ, 8 1 सा 8 करती हूँ, यहाँ पर फिर 8 1 सा 8 करती हूँ. 14 माइनस 8 अगर देखें दैट विल बी 6. तो ये बन जाएगा 64. वी नो 8 8 सा 64 एंड वन मोर 0. सो फाइनली हमारा बचा क्या है न्यूमरेटर में 20 इंटू 180. लेट्स डू दैट. ये 0 0 जो है दोनों 0 पहले लिख लेते हैं. 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 आएगा. सो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल अमाउंट is 3600, which should be invested for 5 years at 8% per annum to get a simple interest of ₹1440. All right, question समझ में आ जाए. Answer solution is not difficult, but understanding this kind of question might be difficult for some people. So that's why I choose to take this kind of questions so that your theory, your fundamentals become clearer and clearer. This is a very interesting question. Bina invested ₹15,000 at 15% per annum from 17 June 2021 to 10th November 2021. Calculate the interest. Now, Bina has not even invested for one full year. She has investment amount for even less than that. A few months, और वो भी पूरे months नहीं है. 17th June 2021 से शुरू किया था उसने और एंड किया है, रियलाइज कर लिया है, सब कुछ निकाल लिया है. नॉट निकाल लिया है बट इंटरेस्ट कितना हुआ है वो जानना चाहती है ऑन 10th November 2021. So let's understand how to solve this question. So these are the kind of questions that I'm attempting. So if you want to remain updated and learn whatever I am posting, please do like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. Otherwise you will miss out on this kind of questions. So Bina invested ₹15,000. So principal amount is ₹15,000. That rate at which she invested was 15% per annum. Now comes the time, which is the trickiest part. किस तरह से निकाला टाइम? तो 17th June 2021 से उसने उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है. सो इफ यू कैलकुलेट देर आर अराउंड जून में 30 डेज होते हैं, राइट? सो 17 को अगर मैं इंक्लूड करूँ, शी हैज इन्वेस्टेड इन जून for about 14 days, right? And उसके बाद जुलाई में there are 31 days and August में again there are 31 days and उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर में देखें तो सितंबर में 30 days हैं, अक्टूबर में again 31 days and finally आ गया नवंबर में 10th as on 10th November वो जानना चाहती है. So I won't count that 10th November into the calculation. 9th November तक उसे कितना इंटरेस्ट मिला है at 15% per annum on her principal 15,000 वो कैलकुलेट करेंगे. So 10th November में मैं अगर देखूं तो 9th November तक कितना हुआ है वो देखूंगी, राइट? सो इतना अगर मैं कैलकुलेट करूं 9 + 1 + 0 + 1 + 1 + 4 ये करूंगी तो मेरा ये यूनिट जो वंस प्लेस का नंबर निकल जाएगा. तो 9 + 1 is 10, 10 11 12 और ये हो गया 12 + 4 16. सो 6 लिख के 1 गेट्स कैरिड ओवर. सो 2 5 8
11, and then this is 14, so 146 days in all. Now time period we have, if you have seen my first video, it should be in years because rate percent is declared as annually, right? एक yearly दिया गया है, 15% मिलेगा on every 100 I am going to get rupees 15 back after a year. So मुझे ये time जो 146 days है, I have to convert it into years, so it should be 146 divided by 365, that will give me the in terms of year the time period. So अगर आप देखो 73 दोनों में common है, 146 में भी और 365 में भी. So let's cancel it out. 73 अगर multiply करोगे 5 के साथ, this is 365, and 73 if you multiply with 2 it will be 146. तो ये हो गया ये time period 2 by 5 years, right? So now simple interest हम easily calculate कर सकते हैं, that is equal to P into R into time period by 100. So 15,000 into 15 into 2 by 5 divided by 100. Now ये जो common zeros है इनको cancel out कर लेती हूँ. ये 5 1s are 5, 5 3s are 15 calculate करती हूँ. Denominator में सिर्फ 1 बचा है, numerator में बचा है 150 into 6, 3 into 2 is 6, so 150 into 6 total करना है. So ये 0 पहले लिख देती हूँ, फिर 50 into 6 करती हूँ. 6 5s are 30, 3 gets carried over, 6 1s are 6, plus 3 is 709, 78999. So total simple interest that she gets in only how many months? Roughly 5 months time period, not even fully 5 minutes, 5 months time period. She gets is rupees 900. Okay. So ये टाइप के क्वेश्चंस आप जहां पर भी देखें, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई विल हेल्प यू आउट. तो इसी तरह से हम पहले नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, अगर कोई दूसरे डेट्स भी हैं किसी और क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, कन्वर्ट इनटू ईयर, एंड देन यूज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. All right, this question is the simple interest on a certain sum for 8 years at 12% per annum is rupees 3,120 more than the simple interest on the same sum for 5 years at 14% per annum. Find the sum. तो दो लोग और वही इंसान सेम प्रिंसिपल अमाउंट लगा सकता है अलग अलग टाइम पर और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. मान लो फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लॉक इन करके रख सकता है प्रिंसिपल अमाउंट. वो जो लॉक इन करके जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज सेम, बट सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा बिकॉज द नंबर ऑफ ईयर इज डिफरेंट, सो ऑल्सो द rate of interest is also different. So in this case let that principal which is same, let that principal be let it be P, क्योंकि हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, सो लेट दैट बी P. सो ये P में क्या करूंगी, ये P में यहाँ पे लगाऊंगी फॉर द टाइम पीरियड दैट इज 8 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% पर एनम, यहाँ पे लगाऊंगी. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, कोई निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट SI1 लिख देती हूँ इसको. सो इट विल बी 8 into 12 into principal by 100. So if you see I remove this 4 2s are 8 and यहाँ पर भी cancel out करके 25 बना देती हूँ. So 2 into 12 is 24. So 24P by 25 ये है simple interest on the same sum for 8 years and 12% per annum. Now second simple interest, okay, SI2 यहाँ पर calculate करते हैं. That is for 5 years and rate of interest is 14% per annum. So now here if you see SI2 लिख देती हूँ, simple interest is equal to 5 into 14 into P by 100. So यहाँ पर क्या होगा, 5 1s are 5, 5 20s are 100, 2 10s are 20 and 2 7s are 14. So क्या बचा, 7P by 10. Okay, this is the simple interest in the second case and simple interest in the first case is 24P by 25. अब 24P by 25 ज्यादा होगा बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा है, मतलब नहीं ऐसे जनरली नहीं होता है, बट यहाँ पर कंडीशन मतलब ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, पर यहाँ पर लिखा हुआ है इन द गिवन that this simple interest is 3,120 more than the second simple interest. So I can write like this, SI1 is equal to
rupees 3,120 plus SI2. Yeah, because this is 3,120. The simple interest is 3,120 times 20 more than the second simple interest. अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 24p/25, यहाँ पर लिख देती हूँ 3120 प्लस 7p/10. Now I can take both the p terms together like this. On one side I can take okay, and write 3120 on the other side. Now I just have to do 24/25 minus 7/10. यहाँ कर लेती हूँ because ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो मुझे करने ही पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट. सो दैट विल बी एलसीएम क्या होगा, निकल के आएगा, इट विल बी 50 फॉर दीज टू, 25 and 10. So 50 divided by 25 is 2, 2 into 24 is 48. यहाँ पे 50 divided by 10 is 5 and here it is 5 into 7 35. So 48 minus 35 अगर करूँ that will be 8 minus 5 is 3 and 4 minus 3 is 1. So it will be 13/50. Sorry, 13/50. So 13/50 ये total जो है there is a p associated here. So this also is a p associated here. So it will become 13/50p. यहाँ पर लिख देती हूँ 13/50 p is equal to 3120. Now what will be the value of p? Where do I calculate? Let me calculate here. P is equal to 3120 divided by 13/50. तो इसको अगर करूंगी then 3120 into 50 divided by 13 हो जाएगा. Now I have to see if 13 exists, I mean 3112 exists in 31 table or not. So 13 2s are 26. So 31 minus 26 अगर करूंगी 5 बचेगा, 52 हो जाएगा. So 13 4s are 52, right? So 4 और ये एक 0 है, so that 0 will come here. So what I have to do, 240 into 50. So 0 0 ये आ गया, 5 4s are 20 and 5 2s are 10, 10 plus that 2 is 12,000. So rupees 12,000 is the total principal amount which when invested for 8 years at 12% per annum is gives you interest which is 3,120 more than the simple interest on the same sum, that is 12,000 for 5 years at 14% per annum. ऑल राइट, तो मैं कहीं पर यहीं पर आंसर लिख लेती हूँ. प्रिंसिपल यहाँ हमने लिया था, लेट करके लिया था पी. नाउ वी नो द वैल्यू. द वैल्यू इज ₹12,000. All right, I hope I'm clear with this question. If you have any doubts, please let me know in the comment section. So this question says Radhika borrowed ₹12,000 from her friends, out of which ₹4,000 were borrowed at 18% and the remaining at 15% rate of interest per annum. What is the total interest after 8 years? So kabhi if you have a group of friends, you can pull in some money from them and then you say that you promise, there's a mutual understanding कि इतने rate of interest पे मैंने आपसे लिया है, मैं इतने टाइम के बाद अपने बिजनेस में या फिर कहीं पर लगा के आपको वापस कर दूंगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतना इंटरेस्ट इंक्लूड करके मैं आपको टोटल अमाउंट पे कर दूंगा. तो राधिका ने भी वही किया है. सो 12,000 से उसने 4,000 18% पर एनम फॉर 3 years इतने में लगाया है. सो व्हाट विल बी दैट सिंपल इंटरेस्ट? दैट सिंपल इंटरेस्ट विल बी 4,000 into 18 into 3 by 100. तो ये अगर जीरोस कैंसिल हो जाएंगे देन व्हाट विल रिमेन, 18 into 3 is 54, 54 into 40, राइट? 54 into 40 करेंगे, so जीरो तो वैसे ही आ जाएगा, ये जीरो, this zero will come into the answer and that will be 4 4 16, 1 gets carried over, 4 5 20, 20 plus 1 is 2,160. Okay, so this is rupees 2,160. This is the first simple interest on 4,000 rupees. Now rest of the amount, remaining amount from 12,000, she is investing at 15% rate of interest for 3 years. So 12,000 minus 4,000 करेंगे तो कितना आएगा? 8,000 आएगा. 8,000 into 15 into 3 by 100.
सो ये क्या होगा, अगर हम 50 इंटू 3 करें 45 होता है, 45 इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा, पहले तो मैं ये जीरो लिख दूं, ये जीरो लिखने से फिर ये अगर मिस आउट हो गया आंसर गलत हो जाएगा। नाउ 45 इंटू अगर 8 करेंगे, 8 5 जा 40, सो जीरो आ गया, 4 गेट्स कैरिड ओवर, 8 4 जा 32, क्योंकि 45 का 5 हो गया, अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 32 प्लस 4 दैट इज 36। सो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इस रुपीज 8000 पे हो गया 3600। सो टोटल इंटरेस्ट विल बी आफ्टर 3 years, it will be the sum of these two amounts। तो एक स्टेटमेंट लिख ही लेते हैं। सो दिस इज 2160 प्लस 3600, so which is 0675. So total amount that Radhika is going to give back to her friends would be rupees 12,000 plus 5,760, which is the interest. All right. I hope I'm clear with the questions. Like always, as I say, any doubts, any questions you have in mind which you have not solved, please let me know in the comment section.